Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. Our subject is science, unit number 3, lecture number 14, and our today's topic is waste, sensitivity and reproduction. But before this, students, if you remember, in our previous class we learned about food and respiration. If we talk about the life functions of living things, then I repeat it again. The life functions of living things are movement, growth, food, respiration, waste, sensitivity, and reproduction. In our last class, we learned about food and respiration. If we talk about food, then here we will discuss that all living things need food in order to carry out their life processes. Food gives them energy. Animals get this energy by eating different plants and other animals. If we talk about fish, so fish swallow their food in wholes or in lumps. They do not chew. Animals such as cows, deer, goats, and other herbivores, they chew their foods. If we talk about mosquito uses a sharp needle-like mouth part to suck blood from human and animals. We here also discuss about plants. The plants do need energy. Plants with green leaves make their own food. They do this by a process called photosynthesis, using water from the ground, carbon dioxide from the air, and the energy from sunlight. But not all plants make food in this way. Some plants like Rafflesia, shrooms, pitcher plant, Venus flytrap, they do not make their own food. They are called carnivores. We also learn respiration, in which we learn that living things cannot survive without oxygen. Both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. Insects breathe through tiny holes called spiracles. Fish, prawns, crabs, and tadpoles breathe through gills. And if we talk about plants breathe through the tiny holes called stomata in the leaves. Air and water can pass through these holes. Animals such as earthworm and frogs, they breathe through their moist body surface when they air in water. Now students, please open page number 28, and it is our today's topic, which is waste, sensitivity and reproduction. I start the reading. All living things take in food. तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुराक को खाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं. Some of the foods is not needed by the body. खुराक कुछ ऐसी होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. This is passed out as waste. तो वो इखराज के तौर पर हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है, गुज़र जाती है. Waste can be solid or
फ्लूइड। वेस्ट जो है सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। सम गैसेस आर ऑल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी। कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी हमारे ह्यूमंस को मीन्स इंसानों को ज़रूरत उसकी नहीं होती। देन हम क्या करते हैं, हम अपने जब रिस्पायर कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। दिस एक्सेल्ड एज वेस्ट एयर। तो ये एक वेस्ट एयर की तरह हम इसे बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कहता है वो अमल जिसमें जो बॉडी है, हमारे जिस्म जो है, एक हमारे ब्लड से, टिश्यू से और बाकी अज़ा से जो वेस्ट का इखराज करता है, उस जो वेस्ट निकालता है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन यानी कि अमल इखराज। आई रिपीट दिस, द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। I again read paragraph. Students, please listen carefully and you can easily understand waste. All living things take in food. Some of the food is not needed by the body. This is passed out as waste. Waste can be solid or fluid. Some gases are also not needed by the body. For example, humans do not need the carbon dioxide in air. This is exhaled as waste air. The process in which the body removes waste from the blood, tissues, or organs is called excretion. Next one is sensitivity, hasasiyat, senses, feelings. Many animals have the same senses as human. बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनमें सेम सेंसेस होते हैं जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं, इंसानों में होते हैं। They have a nose to smell with. उनके पास नोज़ होता है जिससे वो स्मेल करते हैं। Eyes to see, आँख देखने के लिए। Ears to hear with, कानों से सुना जाता है। A tongue to taste with, ज़ुबान से चखा जाता है। And a skin with which they feel things around them, और स्किन, जिल्द, जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में उसको वो महसूस कर सकते हैं। Some creatures feel or sense things with special body parts. अब कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो कि स्पेशल उनके सेंसेस होते हैं जिसके ज़रिए वो महसूस कर सकते हैं कि उनके अराउंड क्या हो रहा है। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स, फीलर्स मीन जिसके ज़रिए आप महसूस कर सकते हैं। और एंटेना विद विच दे कैन सेंस, और एंटेनास होते हैं जिसके ज़रिए वो सेंस कर सकते हैं व्हाट इज़ अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फ्लाइज फ्लाई अबाउ फूड, मक्खियाँ जो हैं वो फूड के ऊपर उड़ती हैं। अ फ्लाई टीट्स विद इट्स फीट, अब जो फ्लाई है वो अपने पैरों से चखती है, फील करती है, टेस्ट करती है फूड को। लाइक दिस, इफ़ यू सी दिस डायग्राम, you can see here cockroach, and this one is called feelers. This one is called feelers. So we can here continue this. Snakes have long tongue. You can see this is a picture of snake. You can see over here. This one is the tongue of snake. Snakes have long tongues. इनकी काफ़ी लंबी ज़ुबानें होती हैं। These pick up chemical particles from the air and ground.
इसके ज़रिए क्या करते हैं, ये ग्राउंड पर और एयर पे जितने भी केमिकल पार्टिकल्स हैं ये उन्हें पिक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स। अब एक स्पेशल ऑर्गन होता है इनके हेड पर जो कि रिएक्ट करता है खुशबू से। खुशबू कोई भी जब वो स्मेल करता है तो वो रिएक्ट करता है। इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे। तो इसके ज़रिए क्या ये जो स्नेक है ये उसकी हेल्प आउट होता है कि उसका शिकार उसके इर्द गिर्द है। मीन्स जब भी उसके इर्द गिर्द कोई भी उसको अपना प्रे फील होता है तो जो स्पेशल रिएक्शन है इनकी जो हेड पे जो सेंस हैं उनको ये उसके ज़रिए ये सेंस डेवलप हो जाता है कि इर्द गिर्द इनके क्या है, उनका कोई ना कोई प्रे मौजूद है। अ ज़ेब्रा यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस ऑफ साइट। अब जो ज़ेब्रा है ये कॉम्बिनेशन कहते हैं मिलाप, दो चीज़ों का मिलना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस ऑफ साइट, देखने की, हेयरिंग सुनने की, एंड स्मेल सूंघने की, टू टेल इफ़ देयर इज़ अ लाइन नियर बाय। अगर इसके इर्द गिर्द कहीं पर लाइन है तो वो इसके लिए हेल्प आउट होते हैं। स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स। आप ये स्पाइडर को आप देखें, जो मकड़ी है इसकी जो लेग्स हैं वो हेयरी हैं, मीन्स इसके ऊपर हेयर्स होते हैं। दीज पिक अप मोमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इन इट्स वेब। वेब बीन जाल, जब भी कोई स्मॉल इंसेक्ट इसके जाल में आ जाता है तो वो इसको पिकअप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। At page number 29 you can see over here a bat has very sharp ears। जो बैट कहते हैं चमगादड़ को, इनके जो ears होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। It makes a high pitched sound which echoes off surfaces। अभी क्या करते हैं, हाई पिच जो साउंड है सरफेस सतह पे जो बनती हैं जिसे आवाज़ कश कहते हैं, इकोस, तो ये इको प्रोसेस के ज़रिए ही सुनाई देता है इनको। इफ़ वी टॉक अबाउट फिशेज़, फिशेज़ हैव 6 सेंसेस। अब फिश की कितनी सेंसेस हैं, 6। फिश हैव अ 6 सेंस। फिश की जो छठी हिस्सा है, इट इज़ अ लाइन अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो एक लाइन है इनकी बॉडी के अलोंग, ये वहाँ पर इनकी जो सेंस है इसको 6 सेंस बोलते हैं ऑफ द बॉडी कॉल्ड द लेटरल लाइन। इस लाइन को बोलते हैं लेटरल लाइन। With it, a fish feels vibration in the water। I again repeat this, fishes have a sixth sense। Fishes की जो क्या है, sixth sense है। It is the line along the sides of the body called the lateral line। अब जो lateral line है इनके ऊपर, इनकी बॉडी पर एक lateral line होती है, इसके ज़रिए ये वाटर में जो वाइब्रेशन है उसको फील करती हैं। The fish then knows where there is food or danger। इसके ज़रिए जो फूड और डेंजर का जो आइडिया है वो फ़िश को होता है, वो जान जाता है कि इन्हें कहाँ से खुराक और कहाँ से खतरा है। I again read this paragraph for you people। Fishes have a sixth sense। It is a line along the sides of the body called the lateral line। With it, a fish feels vibration in the water। The fish then knows where there is food or danger। You can see over here, the leaves of the mimosa plant are very sensitive। A touch will make up them close up। एक आप स्मॉल भी आप टच करते तो ये आपस में काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। Our next topic is reproduction। The next one is reproduction। The word reproduction means mean दोबारा, again, and production means पैदावार। All living things produce young ones like themselves। जितने भी living things हैं वो produce करते हैं अपने ही जैसे बेबीज़ को। Cows, giraffe, cats, elephants and monkeys all give birth to babies। Cows, giraffe means zarafa, cats mean बिल्लियाँ, elephant means हाथी, and monkeys mean बंदर। ये तमाम क्या करते हैं, अपने से बेबीज़ को
पैदा करते हैं. Some animals produce only one baby at a time while others produce several. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक टाइम पे जस्ट वन बेबी को ही बर्थ करते हैं, जबकि अदर जो हैं वो अपने से कई बेबीज़ को बर्थ करते हैं. Some such as mice कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज़ एट वन टाइम. अब ये जो माइस हैं वो एक टाइम पर 32 बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. ऑल द बेबीज़ ग्रो टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स. अब जितने भी बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं. यू कैन सी ओवर हियर एलिफेंट एंड एलिफेंट बेबीज़ आर सेम. You can also look at your page number 30. Birds, reptiles and insects lay eggs from which babies hatch. अब जितने भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स मीन्स जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, और इंसेक्ट्स मीन्स हशरात, ये तमाम क्या करते हैं, एग्स देते हैं और एग्स में से बेबी जो हैं वो निकलते हैं. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स क्या हैं, बीज पैदा करते हैं. अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जो बीज हैं वो ग्रो अप होते हैं एक यंग प्लांट में और कई तरीक़ों से वो एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रो अप होते हैं. सीड्स कैन बी डिस्पर्स और स्प्रेड. डिस्पर्स मीन मुंतशिर होना, स्प्रेड मीन फैलना बाय एनिमल्स. अब देखिए सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड आउट होते हैं, फैलते हैं. कौन से वेज हैं, बाय एनिमल्स, एनिमल्स के ज़रिए, बर्ड्स के ज़रिए, इंसेक्ट्स हशरात के ज़रिए, विंड हवा एंड वाटर पानी के ज़रिए. अब जो सीड्स हैं वो कैसे स्प्रेड आउट होते हैं, बाय एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर. Some plants produce spores, not seeds. कुछ प्लांट्स हैं जो स्पोर्स पैदा करते हैं, सीड्स नहीं. स्पोर्स आर यूजली स्प्रेड बाय विंड और वाटर. और वो कैसे फैलते हैं, विंड और वाटर से. लेट्स चेक आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 and question number 6, they are related to your topic. Why do animals need to be able to sense danger? किस तरह जानवरों में सेंस जो है डेंजर की, कि उनके गिर्द खतरा है, किस तरह वो उनको इस सेंस की क्यों ज़रूरत होती है. एनिमल्स नीड टू सेंस ऑफ डेंजर फॉर देयर प्रोटेक्शन. एनिमल्स को ख़तरे की सेंस की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें, ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ में रह सकें, प्रोटेक्शन में रह सकें. What are antenna? Which animals have them? And why are they used for? एंटेना क्या है, ये किन जानवरों में होता है, एंड वो इन्हें किस लिए इस्तेमाल करते हैं. The answer is antenna are long filament like structure on the head of insects. ये हशरात के हेड पर एक लॉन्ग फिलामेंट होता है जिसे एंटेना कहते हैं हम. इंसेक्ट्स हैव फीलर्स. इंसेक्ट्स में क्या है, फीलर्स हैं, महसूस करने का जो पॉइंट है. और एंटेना विद विच दे कैन सेंस व्हाट इज़ अराउंड दैम. इसके ज़रिए वो ये सेंस डेवलप रहती है उनमें कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 you must write and learn it. Today's diary is reading page number 28 to 30. Learn and write question number 6 and 7. Thank you so much. Allah Hafiz.